हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम अभिजीत यादव है और आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो सीसैट में कहीं कोने पे अटक रहे हैं, जिनको मतलब लग रहा है कि भाई 65 टू 70 के बीच में कहीं नंबर आ रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है। वाई? बिकॉज ओवर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स वी हैव सीन कि सीसैट की आंसर कीज़ में बहुत सारे वेरिएशन आते हैं। नॉट जस्ट सीसैट, जीएस की आंसर कीज़ में भी जो यूपीएससी फाइनल निकालता है वर्सेस जो इंस्टीट्यूट निकालते हैं उनमें काफ़ी डिफरेंस आता है। तो वाई डू वी नीड अनदर की? विल जस्ट टॉक अबाउट इट बिफोर वी बिगिन। ये मेरे बारे में कुछ बेसिक जानकारी, and this is the reason why we are talking about this and why I am creating another CSAT analysis video despite हज़ारों जो ऑलरेडी यूट्यूब पे आप देख सकते हो। Why? क्योंकि 2020 में जब मैंने सिविल सर्विसेज एग्जाम दिया था तो आई हैड अटेम्प्टेड 63 क्वेश्चंस एंड मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स के आंसर की से मेरे करीब 120 नंबर बन रहे थे। बट इवेंचुअली एज यू सी कि जब फाइनल रिजल्ट आया तो 140 पॉइंट समथिंग मार्क्स मेरे बने। तो देयर इज अ वाइड वेरिएशन ऑफ 20-21 नंबर, राइट। एंड ये वाला जो वेरिएशन है ये मुझे नहीं लगता कि भाई मैथमेटिक्स वाले पार्ट्स में आता है। क्यों? मैथमेटिक्स वाले पार्ट में मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट इंस्टीट्यूट्स विल गेट इट करेक्ट। मतलब वहाँ गलती करने का स्कोप कम है, चांस कम है। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स इज अ स्लाइटली मोर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट कि अगर आपने चीज़ सही तरीके से पकड़ी है तो ठीक है। बट कॉम्प्रिहेंशन में ये चीज़ मायने इतना नहीं रखती, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में एक सर्टन अमाउंट ऑफ सब्जेक्टिविटी रहती है एंड दैट इज द रीजन वाई आई एम मेकिंग टुडेज वीडियो, राइट। सो in today's video we will just be discussing some basics of comprehension कि क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या चीज़ें और करनी चाहिए थी। एंड बाकी जो मैथमेटिक्स वाली वीडियो है सीसैट की, दैट आई विल बी मेकिंग सेपरेटली। एंड इफ़ यू वांट द आंसर की डायरेक्टली यू कैन चेक द लिंक इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे ए और बी सेट की आंसर की हमने ऑलरेडी डाल दी है। वी विल अपडेट दी सी एंड डी सेट आंसर की सून, राइट। तो कॉम्प्रिहेंशन में इस साल 27 क्वेश्चन आए थे। डिफ़िकल्टी के हिसाब से अगर उन्हें रेट किया जाए तो करीब 3, 4 और 3 10 क्वेश्चंस इन 27 में से मीडियम टू हार्ड डिफ़िकल्टी के थे। इजी क्वेश्चंस जो थे दे वर 3, 4, 4, 3, 3, तो ये 10 एंड 7, 17 क्वेश्चंस आपके थोड़े इजी डिफ़िकल्टी के थे। इजी वर्सेस हार्ड या मीडियम डिफ़िकल्टी में क्यों बोल रहा हूँ, वी विल डिस्कस एज वी कम। बट ईजी डिफिकल्टी वाले क्वेश्चंस वो थे जहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस नहीं थे, आपसे सीधा सवाल पूछा गया और आपको ABCD चूज करना है। हार्ड डिफिकल्टी, मीडियम डिफिकल्टी वाले क्वेश्चंस वो है जहाँ पे क्वेश्चन के बाद आपको 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट दी गई हैं एंड उनमें से आपको चूज करना है, राइट। सो लॉजिकल रीजनिंग के कुछ 13 क्वेश्चंस थे जिनमें कंडीशनल लॉजिक काफ़ी ज़्यादा चल रहा था, विच इज़ लाइक फैमिली रिलेशन, सिटिंग इन अ सर्कल, ये सब टाइप की चीज़ें। एंड सेट थ्योरी के कुछ क्वेश्चंस थे विच आर ऑल्सो लॉजिकल रीजनिंग। मैथमेटिक्स में इन्हें नहीं गिने हम, क्योंकि यहाँ पे बहुत सिंपल सा अगर आप लॉजिक लगाना समझते हो कि अगर A इज टू B, B इज टू C, कुछ 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 आप चेन बना के उसको फॉलो कर सकते हो, सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। फाइनली मैथमेटिक्स के करीब 40 क्वेश्चन थे, majority of which came from counting a number system, speed, distance, time and percentages, right। तो ऑल्सो ऑफकोर्स जो लोग इन इसके बारे में नहीं जानते, upscprep.com नए कोर्सेज निकाल रहा है, इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डाउट्स डे का फंडा है कि भाई एनी टाइम वी लॉन्च एनी कोर्स, आप एक भी कोर्स में ज्वाइन करते हो तो डाउट्स डे पे जो 4 डाउट सेशन है फॉर GS प्रीलिम्स, GS मेंस, GS CSAT एंड सोशियोलॉजी, किसी भी डाउट सेशन में आप आ सकते हो। एंड प्रिंसिपल्स देख लेना एंड लेट्स कम टू द पेपर इटसेल्फ, राइट। सो वी विल बी डूइंग these sorts of things एंड क्योंकि अब मेरे सर पे थोड़ा चीज़ें आ रही हैं तो आई विल जस्ट डू दिस एंड दैट शुड बी फाइन। तो कभी कभार अगर मेरी आँख सफ़ेद चमके तो दैट इज़ फाइन, राइट। सो वी विल बी फॉलोइंग सेट ए सेट में हम जो पैसेजेस हैं वी विल ओनली बी कवरिंग द पैसेजेस इन टुडेज वीडियो। मैथमेटिक्स वाला जो सेक्शन है दैट वी विल कवर इन अनदर वीडियो, राइट। सो टू बिगिन विद द फर्स्ट पैसेज, लेट्स लुक एट इट। The main threat to maintaining progress in human development comes from increasingly evident unsustainability of production and consumption patterns. Current production models rely heavily on fossil fuels. ठीक है, मेन थ्रेट, ठीक है। तो मतलब जो कीवर्ड्स हैं मैं यहाँ पे अपने अंडरलाइन करता हुआ चल सकता हूँ क्लोजली। अब अनदर थिंग कि ये पैसेज थोड़ा छोटा है तो इसे मुझे कर लेना चाहिए। जब लंबा पैसेज है, जब आधे पेज का सिर्फ पैसेज ही लिखा हुआ है, सो इन दैट केस इट मेक सेंस कि आप उस पैसेज को स्किप करके आगे वाले क्वेश्चंस पे चले जाएं एंड देन कम बैक टू दैट बिगर पैसेज लेटर ऑन।
The close link between economic growth and greenhouse gas emissions needs to be, we know that this is unsustainable because resources are finite. Close link between economic growth and greenhouse gas emissions need to be severed for human development to become truly sustainable. Some developed countries have begun to alleviate the worst effects by expanding recycling and investing in public transport and infrastructure. But most developing countries are hampered by the high costs and low availability of clean energy sources. Developed countries need to support developing countries' transition to sustainable human development. तो इसका सो दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस वाई इसको आप थोड़ा हार्ड वाली साइड पे ले सकते हो, मीडियम वाली साइड पे ले सकते हो. क्यों? क्योंकि 3 स्टेटमेंट है, 3 में से आपको चूज़ करनी है. ईजियर क्वेश्चंस आर दोज जहाँ पे डायरेक्टली आपसे पूछा गया कि क्या मतलब है, राइट. तो अनसस्टेनेबिलिटी इन द प्रोडक्शन पैटर्न इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग? हैवी डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, सीम्स करेक्ट. लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, सीम्स करेक्ट. एक्सपेंशन ऑफ रिसाइकलिंग, तो एक्सपेंशन ऑफ रिसाइकलिंग इज नॉट द केस. क्यों? क्योंकि एक्सपेंशन ऑफ रिसाइकलिंग इज, यहाँ पे जैसे देखोगे आप तो ये बोला है कि वर्स्ट इफेक्ट्स को एलिविएट करने के लिए रिसाइकलिंग एक्सपैंड हो रही है. तो अनसस्टेनेबिलिटी नहीं है ये, दिस इज द ऑपोजिट. सो 3 को अगर मैं एलिमिनेट करता हूँ, आई हैव ओनली 1 and 2. तो 1 भी हमें ठीक लग रहा था. सो इन दिस केस ए बिकम्स द राइट आंसर ओवर हियर. सेकेंड में हम जाते हैं. तो डेवलप्ड कंट्रीज कैन सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट बाय मेकिंग क्लीन एनर्जी सोर्सेज अवेलेबल एट लो कॉस्ट. तो डेफिनेटली ये तो डायरेक्टली पैसेज में लिखा हुआ ही था कि हाई कॉस्ट एंड लो अवेलेबिलिटी, तो ऐसे सपोर्ट कर सकते हैं बाय मेकिंग दिस हाई कॉस्ट लो. प्रोवाइडिंग लोन्स फॉर इंप्रूविंग देयर पब्लिक ट्रांसपोर्ट एट नॉमिनल इंटरेस्ट रेट्स. ओके, सीम्स रीजनेबल, मतलब डायरेक्ट नहीं है बट फिर भी. एनकरेजिंग देम टू चेंज देयर प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन पैटर्न्स. तो ये वाला जो है ये इतना मतलब सही नहीं लग रहा क्या है कैसे है, क्योंकि डायरेक्टली कहीं पे मेंशन नहीं है ये, बट एट द सेम टाइम ये इन्फर्ड है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. डेवलप्ड कंट्रीज कैन सपोर्ट, तो एक तो सबसे पहली चीज़ ये कैन स्टेटमेंट कि दे कैन सपोर्ट, तो कायदे से तो इस तरीके से भी सपोर्ट किया जा सकता है. क्यों? बाय चेंजिंग प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन पैटर्न्स का क्या मतलब है? यू आर, let's say, promoting recycling and you are promoting recycling. कि यहाँ पे आपने expanding recycling की जो बात करी थी, you can encourage this, and in order to encourage recycling that means a change in production and consumption patterns. तो अगर इस हिसाब से हम देखें कि भाई can तो can वाली चीज़ के हिसाब से all 3 become possible. यहाँ पे ओनली होता, यहाँ पे शुड होता, समथिंग अदर होता, तो कैन है क्योंकि यहाँ पे तो कैन में ऑल 3 ऑफ दीज स्टेटमेंट्स बिकम प्रोबेबल. अदरवाइज ओनली लिखा होता, कुछ ऐसा होता, तो देन वी वुड हैव बीन अ लिटिल मोर स्केप्टिकल. बट सिर्फ कैन सपोर्ट, सो देन डी बिकम्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इन दिस केस. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो unless forces and tendencies which are responsible for destroying the country's environment are checked in the near future and afforestation of denuded areas is taken up on a massive scale, the harshness of climatic conditions and soil erosion by wind and water will increase to such an extent that agriculture, which is the mainstay of people, will gradually become impossible. Right? तो यहाँ पे थोड़ी चीज़ें अंडरलाइन कर लेते हैं. Forces and tendencies which are responsible for destroying the countries are checked in the near future. And afforestation is not taken up on a massive scale. Soil erosion by wind and water will gradually become impossible. The desert countries of the world and our own desert area in Rajasthan are a grim reminder of the consequences of large-scale deforestation. Pockets of desert-like landscape are now appearing in other parts of the country, including Satluj-Ganga plains and the Deccan Plateau, where only a few decades back there used to be lush green forests with perennial streams and springs. There is only brown earth. Few decades, perennial streams, brown earth, bare vegetation without any water in the streams, and springs except in the rainy season. ठीक है, तो अगेन यहाँ पे क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, एंड लेट्स लुक एट 3 स्टेटमेंट्स. According to the passage given above, deforestation and denudation will ultimately lead to which of the following? Depletion of soil resource seems appropriate. क्यों? क्योंकि ये directly mentioned है यहाँ पे.
यहाँ पे द हार्शनेस, सॉरी अबाउट दैट, अगर इसको मैं हटाऊँ, इसमें यहाँ से तो यही वाली चीज़ जो बोली गई है, विल इंक्रीज टू सच एन एक्सटेंट, सॉइल एरोजन, राइट। तो यहाँ पे क्या बोला गया है दैट डिफॉरेस्टेशन एंड डेन्यूडेशन विल लीड टू डिप्लीशन ऑफ सॉइल रिसोर्सेज, क्योंकि सॉइल एरोजन हो रहा है। शॉर्टेज ऑफ लैंड फॉर द कॉमन मैन, तो अब ये थोड़ा सा मतलब नॉट डजंट सीम सो अप्रोप्रिएट, कहीं डायरेक्टली मेंशन नहीं है। विल अल्टीमेटली लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, एंड ऑप्शन अब अगर आप देखो तो ऑप्शन में ऐसा ही है कि आप कोई एक स्टेटमेंट एलिमिनेट कर पाते तो यू शुड बी एबल टू डू दिस। सो आइडियली तो मतलब आगे नहीं जाता मैं बहुत बार, बट सिंस एग्ज़ाम में ऐसा नहीं करते हैं, एग्ज़ाम में इट इज़ बेस्ट इफ़ यू रीड इट थ्रू। तो हम दोबारा एक बार पैसेज को जाके देखेंगे कि क्या वाटर रिसोर्सेज को स्ट्रेस में बताया जा रहा है। Soil erosion by wind and water will increase to such an extent that agriculture, the desert countries of the world, तो जब डेजर्ट कंट्रीज़ की बात आ जाती है तो डेजर्ट कंट्रीज़ की बात में सबसे बड़ी या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि भाई वाटर स्केर्सिटी। एंड यहाँ पे लास्ट में आते आते देयर इज़ ऑल्सो सम टॉक ऑफ वाटर स्केर्सिटी, कि भाई पहले जो पेरिनियल स्ट्रीम्स होती थी वो अब नहीं है। सो एंड बिकॉज एग्रीकल्चर विल बी थ्रेटेंड, so 1 and 3 seem the most appropriate answers over here. Shortage of land for the common man, तो shortage of land यहाँ पे कहीं डायरेक्टली मेंशन नहीं है, डेजर्ट कंट्रीज़ के बारे में बात करिए। इट इज़ अ ग्लोबल स्केल पे या मतलब कंट्री वाइड स्केल पे चीज़ों को देखा जा रहा है, एंड मतलब पर्टिकुलर इंडिविजुअल या स्टेटस ग्रुप, इकोनॉमिक ग्रुप्स के बारे में यहाँ पे कोई बात नहीं है इस पैसेज में। सो दिस सेकेंड स्टेटमेंट डज नॉट सीम अप्रोप्रिएट, सी वुड बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर। सो जो एग्जांपल मैं दे रहा था कि भाई जब इतनी बड़ी स्टेटमेंट हो जैसे क्वेश्चन 5, तो इस क्वेश्चन को मतलब इस पे जाना ही नहीं है, छोड़ दो, आगे चलो। एंड ऑब्वियसली 5th 6th ये सब टाइप क्वेश्चन हम अभी नहीं लेंगे। आई मेक अनदर वीडियो वेयर आई बी कवरिंग द मैथमेटिक्स पार्ट। फॉर नाउ विल ओनली बी कवरिंग द इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पार्ट्स। तो राइट, दिस इज़ वन ऑफ द रीजन वाई आई से कि दिस इज़ रिलेटिवली ईजियर। क्यों? क्योंकि सीधा 4 ऑप्शन आपको दे दी गई हैं, इनमें से आपको एलिमिनेट करना है। In simple matters like shoemaking, we think only a specially trained person will serve our purpose. But in politics, we assume that everyone knows how to get votes, knows how to administer a state. When we are ill, we call for a trained physician, whose degree is a guarantee of specific preparation and technical competence. We do not ask for the handsomest physician. तो क्या बात हो रही है? स्पेसिफिक प्रेपरेशन एंड टेक्निकल कॉम्पिटेंस। वी डू नॉट आस्क फॉर द हैंडसमेस्ट पोजिशन और द मोस्ट एलिक्वेंट वन। वेल देन, व्हेन द होल स्टेट इज इल, शुड वी नॉट लुक फॉर द सर्विस एंड गाइडेंस ऑफ द वाइजेस्ट एंड द बेस्ट, राइट। तो स्टेटमेंट जो पैसेज है इट्स अबाउट कि भाई पॉलिटिक्स में हमें थोड़ा क्वालिफाइड लोग चाहिए। एंड लेट्स फिगर आउट कि क्या एग्जैक्ट which of the following statements reflects the message of the author of the passage, best reflects, again, so there can be multiple but best हमें चाहिए। We assume that in a democracy any politician is qualified to administer a state, तो क्या ये valid है यहाँ पे? But in politics we presume that everyone knows who knows how to get votes, knows how to administer a state. So ये तो डायरेक्टली दी हुई है, वी अज्यूम। सो लेट्स जस्ट सर्कल इट एंड मूव ऑन, चेक आउट ऑल द अदर स्टेटमेंट्स। पॉलिटिशियंस शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम दोज ट्रेन्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो सेकंड पार्ट पे अब अगर आओ तो इन्फरेंस जो यहाँ से आ रही है वो यही आ रही है कि भाई पॉलिटिशियंस शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम दोज ट्रेन्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन। वाई? बिकॉज देयर इज अ टॉक ऑफ स्पेसिफिक प्रिपरेशन, टेक्निकल कॉम्पिटेंस, इन सब चीज़ों के बारे में बात करी है कि भाई आप मतलब हैंडसमेस्ट फिजिशियन के पास नहीं जाओगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, वी नीड टू डिवाइज अ मेथड टू ऑफ बारिंग इनकॉम्पिटेंस फ्रॉम पब्लिक ऑफिस। तो इसके बारे में कहीं बात नहीं हुई है स्टेटमेंट में, एंड ये इस पैसेज का कोई पर्पस भी नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि पैसेज इज टॉकिंग जस्ट इन अ फिलोसॉफिकल लेवल, एंड दिस इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग कि भाई नहीं, हमें एक तरीका चाहिए कि भाई इनको बाहर निकाला जाए। बाहर निकालने की बात ही नहीं हुई है यहाँ पे। सो दिस इज़ नॉट। As voters select their administrators, the eligibility of politicians to administer a state cannot be questioned. So this is स्टेटमेंट दैट सेज कि अगर ए हो गया कि मतलब उसने वोट ले लिया तो भाई हम उस पर सवाल नहीं कर सकते, विच इज़
not the case of the passage above, because the case that the passage above is making कि भाई सिर्फ और सिर्फ अगर आपको वोट लेना आता है तो that does not mean that you know how to administer a state. तो A और B में से हमें बेस्ट ढूंढनी है. We assume that in a democracy, any politician is qualified to administer a state, and politicians should be selected from those trained in administration. So between these two, I feel A is a lot more appropriate in this case. कि assumption है, the author of the passage is saying that in a democracy ये assumption हमेशा ही चलता है, which is mentioned in the first few lines as well, that anybody who knows how to get votes knows how to administer a state. Getting votes is a separate skill. Administering a state is a separate skill, which is also one of the reasons why we have IAS, but more on that later. So A seems the most appropriate option over here. Coming to the second passage, the poverty line is quite unsatisfactory when it comes to grasping the extent of poverty in India. It is not only because of its unsatisfactory when it comes to grasping the extent of poverty in India. It is not only because of its extremely narrow definition of who is poor and the debatable methodology used to count the poor, but it is also the more fundamental assumption underlying it. It exclusively relies on the notion of poverty as insufficient income or insufficient purchasing power. One can better categorize it by calling it income poverty. If poverty is ultimately about deprivations affecting human life, human well-being, then income poverty is only one aspect of it. Poverty of a life, in our view, lies not merely in the impoverished state in which the person actually lives, given by social constraints as well as other personal circumstances to choose other types of living. So basically, poverty of a life, in our view, lies not merely in the impoverished state in which the person lives, but also in the lack of real opportunity to choose other types of living. Even the relevance of low incomes, meager possessions, and other aspects of what are standardly seen as economic poverty relate ultimately to their role in curtailing capabilities. That is, the role in severely restricting the choices that people have to lead variable and valued lives. Right. तो सबसे पहला सवाल यहाँ पे है, वाई इज़ द मेथडोलॉजी अडॉप्टेड इन इंडिया टू काउंट द पुअर डिबेटेबल. सो बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है ये. फर्स्ट सेकंड लाइन में यहाँ पे आ गया था कि भाई नैरो डेफिनेशन है एंड अजम्पशन अंडरलाइन गया कि पॉवर्टी एज इनसफिशिएंट इनकम इज द सोल क्राइटेरिया दैट इज बीइंग यूज्ड. सो लेट्स लुक एट द ऑप्शंस. देयर आर सम कंफ्यूजन रिगार्डिंग व्हाट शुड कॉन्स्टिट्यूट पॉवर्टी लाइन. कंफ्यूजन की तो कहीं कोई बात नहीं हुई है, सो डन सीम अप्रोप्रिएट. There are wide diversities in the conditions of the rural and urban poor. Again, इस चीज़ की कहीं पे कोई बात नहीं की गई है, तो not appropriate. There is no uniform global standard for measuring income poverty. Okay, again, but still not talked about. D directly हमें दिख रहा है कि भाई क्वेश्चन से निकल रहा है. It is based on the proposition of poverty as a meager income or buying capacity. तो ये सीधा सीधा यहाँ पे पैसेज में बोला भी गया है कि it is unsatisfactory because of the assumption underlying, which is poverty as insufficient income is the only criteria that is used. So poverty is based on the proposition as meager income. तो ये is the कारण that poor counting methodology जो है इंडिया में, it is debatable. So D becomes the most appropriate option over here. So coming to the next, why is income poverty only measure of counting the poor? Why is income poverty only one measure of counting the poor? Okay, ये सवाल है कि भाई सिर्फ एक इकलौता कारण ये क्यों है. So एक इकलौता कारण यहाँ पे ये इसलिए हो जाता है, it talks of only one kind of deprivation ignoring all others. Seems very appropriate कि भाई इनकम पावर्टी की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ इनकम पावर्टी ही गिन रहे हैं हम और कुछ नहीं देख रहे हैं. Other deprivations in human life have nothing to do with the lack of purchasing power. तो that's also seems appropriate slightly. Income poverty is not a permanent condition. It changes from time to time. That is fine, but that is not why the definition या इसका जो methodology है उस पर सवाल उठाया जा रहा है. So ये यहाँ नहीं आएगा. Income poverty restricts human choices only at a point of time. So this is also not appropriate. तो A और B में से अगर हमें choose करना है, it talks of only one kind of deprivation ignoring all others. So other deprivations in human life have nothing to do with a lack of purchasing power. So this seems a lot more appropriate, right? अगर
हम पैसेज के हिसाब से भी देखें तो इनकम पॉवर्टी इज़ ओनली वन मेजर ऑफ काउंटिंग द पुअर, बिकॉज अदर deprivations इन ह्यूमन लाइफ हैव नथिंग टू डू विद द लैक ऑफ परचेजिंग पावर. कैसे? यहाँ पे अगर हम देखें, राइट, other deprivations, income poverty is only one aspect of it. If poverty is ultimately about deprivations affecting human life, then income poverty is one poverty of a life, not merely in the impoverished state which people live, but also the lack of real opportunity given by social constraints. तो इस कारण से यहाँ पे B becomes the more appropriate option कि other deprivations in human life have nothing to do with the lack of purchasing power, right? तो purchasing power के अलावा भी, मतलब जैसे अगर आप if we have to take the example, then caste becomes one of the causes of deprivation, या आप कहाँ रह रहे हैं, that becomes another cause of deprivation कि भाई आप कट ऑफ लोकेशन में हैं, सो वो इश्यूज सिर्फ और सिर्फ परचेजिंग पावर की वजह से नहीं है. व्हाट डज द ऑथर मीन बाय पॉवर्टी ऑफ अ लाइफ? तो पॉवर्टी ऑफ अ लाइफ हमने काफ़ी अंडरलाइन कर ही लिया था, सो बट स्टिल लेट्स रीड द ऑप्शंस. ऑल द deprivations ऑफ ह्यूमन लाइफ विच स्टेम नॉट ओनली फ्रॉम द लैक ऑफ इनकम बट लैक ऑफ रियल अपॉर्चुनिटीज. ओके, seems appropriate. Impoverished state of poor people in rural and urban areas? No. Missed opportunities in diverse personal circumstances? Nope. Material as well as non-material deprivations in human life which restrict human choices permanently. तो यहाँ पे ये जो word है that is problematic. Permanently नहीं है. Poverty of a life, this seems most appropriate based on the passage above. तो कभी भी देखो कि जब मैं solve कर रहा हूँ इसको, आई एम नॉट स्ट्रेट अवे टिकिंग सम ऑप्शन एंड गोइंग कि भाई नहीं नहीं हो गया. आई रीड ऑल दी ऑप्शन थ्रू. वाई? बिकॉज अगर पहले ऑप्शन पे ही आपने बेस्ट चूज़ कर लिया तो आपने 3 ऑप्शन और देखे ही नहीं. एंड बेस्ट चूज़ करने का मतलब ये होता है कि आप देख रहे हो कि भाई बाकी सारे ऑप्शंस क्या हैं. सो ऑलवेज इन इंग्लिश पैसेजेस प्लीज़ टेक योर टाइम टू रीड थ्रू ईच एंड एवरी वन ऑफ देम, राइट. तो यहाँ पे आंसर हो गया ए. सो सेकेंड, and let's move on to the next set of passages, right. तो ये बहुत ही बढ़िया पैसेज. क्यों? क्योंकि एक ही पैसेज से आपको 3 सवाल दे दिए, तो आपका समय बचता है. ऐसे पैसेजेस आपको ढूंढ के पहले करने चाहिए जहाँ पे आपको 3 पैसेज पढ़ के 3 सवाल निकलते हैं वर्सेस एक पैसेज पढ़ के 3 सवाल निकलते हैं. चूज़ एक सवाल पढ़ के एक पैसेज पढ़ के 3 सवाल निकालने वाला, उसको पहले करो, ढूंढ के पहले करो, क्योंकि समय बचेगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ जी हो गया, राइट. In some places in the world, the productivity of staples such as rice and wheat has reached a plateau. ठीक है. Neither new strains nor fancy agrochemicals are raising the yields, nor is there much unfarmed land left that is suitable to be brought under the plow. If global temperatures continue to rise, some places will become unsuitable for farming. Okay. Temperatures continue to rise, unsuitable for farming. Applications of technology can help overcome these problems. Agricultural technology is changing fast. Much of this change is brought about by the affluent farmers in West Americas. Techniques developed in the West are being adapted in some places to make tropical crops more productive. Technology is of little use if it is not adapted. In the developing world, that applies as much to the existing farming techniques as it does to the latest advances in genetic modification. Extending to the smallholders and subsistence farmers in Africa and Asia, the best of today's agricultural practices in such simple matters as how much fertilizer to apply and when would lead to greatly increased availability of food for humanity. So would things like better roads and storage facilities to allow for carriage of surpluses to markets and reduce wastage. So let's look at the questions. Based on the above passages, the following assumptions have been made. Development of agricultural technology is confined to developed countries. Is confined यहाँ पे बोला गया है, and ऊपर जो बोला गया है क्या बोला है कि much of this change is brought about by affluent farmers in West America. Much of this change, not all of this change. So confined का मतलब है all of that change. So this statement becomes wrong. तो एक स्टेटमेंट हमने जैसे ही एलिमिनेट किया, हम जाके देखेंगे पहले ऑप्शंस क्या है. ओके, तो ऑप्शन हमारे सिर्फ ये रह गए, राइट. सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं. एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी इज नॉट अडेप्टेड इन डेवलपिंग कंट्रीज.
तो अगर देखा जाए तो क्या बात चल रही है यहाँ पे, टेक्निक्स डेवलप्ड इन द वेस्ट आर बीइंग अडेप्टेड इन सम प्लेसेस टू मेक ट्रॉपिकल क्रॉप्स मोर प्रोडक्टिव। तो ये तो अडेप्टेड तो बोल ही दिया इन्होंने सीधा, इज नॉट अडेप्टेड इन डेवलपिंग कंट्रीज का तो क्या ही मतलब है फिर यहाँ पे, तो ये भी गलत हो गया। तो 21 का हमारा ऑप्शन बन जाता है डी। डी becomes the correct answer over here. Based on the passage above, the following assumptions again have been made. Poor countries need to bring about change in their existing farming techniques. Okay, seems reasonable. Developed countries have better infrastructure and they waste less food. तो अजम्पशन ये क्यों है, क्योंकि हमने बताया गया है कि भाई वहाँ पे नई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन आ रही है एंड जो एग्रीकल्चर को लीड कर रहे हैं वो वेस्ट में ही हैं। सो इन दिस केस तो 22 की अगर हम बात करें तो 1 तो इज़ डेफिनेटली करेक्ट, पुअर कंट्रीज नीड टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन द एग्जिस्टिंग फार्मिंग टेक्निक्स, दैट right in developing world that applies as much to existing farming techniques as that to latest advances, and Africa and Asia का यहाँ पे एग्जांपल दिया कि आप बस इतना सा एक इनोवेशन कर दीजिए कि भाई कब फर्टिलाइजर अप्लाई करना है, सो दैट विल ऑल्सो बी ग्रेट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो फर्स्ट तो करेक्ट है ही, तो ए और सी में से हमारे ऑप्शन बन जाते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज हैव बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दे वेस्ट लेस फूड। तो अजम्पशन की जब हम बात कर रहे हैं तो अजम्पशन ये वाली हम बना सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लास्ट लाइन में क्या बोला गया है, सो वुड थिंग्स लाइक बेटर रोड स्टोरेज फैसिलिटीज दैट अलाउ फॉर कैरेज एंड सरप्लस टू मार्केट्स एंड रिड्यूस वेस्टेज। तो ये क्या बोला गया है कि ये अगर डेवलपिंग कंट्रीज में डाला जाएगा तो उसका फ़ायदा होगा। तो अज्यूम हम क्या करके चल रहे हैं कि भाई जो वेस्ट है वो लीड कर रहा है, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो उन्होंने कर ली होंगी। सो इन सच अ केस दिस ऑल्सो बिकम्स करेक्ट एंड सी बिकम्स आर करेक्ट आंसर ओवर हियर, राइट। Coming to third, based on the above passage, the following assumptions have been made. Again, assumptions: growing enough food for the future generations will be a challenge. Okay, seems appropriate. कुछ इसके बारे में बात करी गई थी शुरू में। देखें एक बार फिर से कि productivity of rice and wheat has reached a plateau. Temperature continues to rise, then some places will become unsuitable to farming. तो growing food अगर assumption लेके चल रहे, growing enough food for future generations will be a challenge definitely. Corporate farming is a viable option for food security in poor countries. तो ये assumption कहीं पे भी पैसेज में कोई mention नहीं है, so this becomes wrong and A becomes your correct answer in 23. So 20. अब हम आ जाते हैं next set of passages पे. So this is a bit of a long passage, but let's go about it. So passage कह रहा है कि natural selection cannot anticipate future environments on Earth. Therefore, the set of existing organisms can never be fully prepared for environmental catastrophes that await life. तो सबसे पहली चीज़, cannot anticipate future environments on the earth, माने कि natural selection ये नहीं बता सकता कि भाई 500 साल बाद environment कैसा होगा। environment drastically बदल गया तो natural selection will take its course, but natural selection will not predict कि भैया वैसा होगा तो ऐसे adapt करो। Therefore, the set of existing organisms can never be fully prepared for environmental catastrophes that await life. An outcome of this is the extinction of those species which cannot overcome environmental adversity. This failure to survive in modern terms can be attributed to the genomes which are unable to withstand geological vagaries or biological mishaps. तो अब जैसे ये कुछ टफ शब्द हैं थोड़े, वेगरीज, इनका आपको मीनिंग पता होना चाहिए। सो फॉर दिस रीजन जब इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आप कर रहे हो तो वोकैबुलरी ऑल्सो बिकम्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। Thus, failure to survive in modern terms can be attributed to the genomes which are unable to withstand geological vagaries. Geological vagaries का मतलब है कि भाई रैंडम अर्थ को एक आ गया कि भाई पहाड़ खसक गया या मतलब कॉन्टिनेंट शिफ्ट हो गया। These are vagaries of nature, meaning कि भाई नेचर कभी भी कुछ भी चेंज कर सकता है। और biological mishaps, infection, diseases and so on. In biological evolution of the earth, extinction of species has been a major feature. The earth may presently have up to 10 million species, yet more than 90% of the species that have ever lived on the earth are now extinct. Once again, the creationist 90% of the species are now extinct. The creationist doctrines कि मतलब भगवान है कि नहीं है, कि धरती किसने बनाई है, ये सब टाइप की चीज़ जो है, fail to satisfactorily address why a divine creator will firstly bother to create millions of species and then allow them to perish.
The Darwinian explanation for extinct life is once again simple. Darwinian explanation, elegant and at once convincing. Organisms go extinct as a function of environmental or biological assaults for which their inheritance deems them ill-equipped. Therefore, the so-called Darwinian theory of evolution is not a theory at all. Okay, strong statement. Theory at all. Evolution happens. This is a fact. The mechanism of evolution, Darwin proposed natural selection, is amply supported by scientific data. Indeed, to date, no single zoological, botanical, geological, paleontological, genetic, or physical evidence has refuted either of the central two main Darwinian ideas. If religion is not taken into consideration, Darwinian laws are acceptable just like the laws proposed by Copernicus, Galileo, Newton. So Copernicus ने क्या कहा था? Earth revolves around the sun and not the sun around the earth. Galileo ने क्या कहा था? This was the heliocentric model. Galileo looked at the stars through the telescope. Multiple other things existed. Newton, laws of motion, and Einstein talked about general and special relativity. Progressive. So Darwinian laws are acceptable just like the laws proposed by Copernicus, Galileo, Newton, and Einstein. Sets of natural laws that explain natural phenomena in the universe. Okay, great. तो अगेन दिस वुड बी वन ऑफ द टफ पैसेजेस. क्योंकि आपको मल्टीपल स्टेटमेंट देखनी है. बट देन अगेन ऑप्शंस आपको क्या बता रहे हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक गलत स्टेटमेंट ढूंढनी है और आपका काम हो जाएगा. राइट. अकॉर्डिंग टू द पैसेज, नेचुरल सिलेक्शन कैन नॉट एंटिसिपेट फ्यूचर एनवायरमेंट्स ऑन अर्थ. राइट. यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में ये बोला है, according to the passage, natural selection cannot anticipate future environments on the earth as species not fully prepared to face the environmental challenge that await them will face extinction. This is correct. यही बोला गया है यहाँ पे. All existing species would get extinct as their genomes would not withstand biological all. So very strong statement. And ये गलत भी है यहाँ पे कि extinction of those species यहाँ पे बोला गया which cannot overcome environmental adversity. All species, all existing species, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे. So this statement becomes wrong. But still we'll go and see कि भाई बाकी क्या है. Inability of the genome to withstand environmental changes would result in extinction. This is also correct. Extinction of species is the common feature. This is also correct कि यहाँ पे भी बोला गया ना कि 90% of the species are now extinct. So we know second is incorrect. सेकेंड को हटाते ही हमारे पास एक ही ऑप्शन बच जाता है विच इज द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर, सी. राइट. 32 देखते हैं. द पैसेज सजेस्ट दैट डार्विनियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इज नॉट अ थ्योरी. तो यहाँ पे नॉट अ थ्योरी, दैट इट इज अ फैक्ट. क्यों है फैक्ट? इट डज नॉट सेटिस्फाई द क्रिएशनिस्ट डॉक्ट्रिन. इनकरेक्ट. एक्सटिंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ बायोलॉजिकल एनवायरमेंटल एंड बायोलॉजिकल असॉल्ट्स. ओके, सीम्स अप्रोप्रिएट. देयर इज नो एविडेंस टू रिफ्यूट इट. एग्जिस्टेंस, ओके, ये भी बोला गया है. एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज एट्रीब्यूटेड टू अ क्रिएटर. सो बी या सी में से यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए. तो देखें दोबारा. देयरफॉर द सो कॉल्ड डार्विनियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इज नॉट अ थ्योरी एट ऑल. एवोल्यूशन हैपन्स. दिस इज अ फैक्ट. द मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन इज एम्पली सपोर्टेड बाय साइंटिफिक डेटा and amply supported by scientific data. Indeed, to date, no single zoological, botanical, geological, paleontological, genetic or physical evidence has refuted either of the central two main Darwinian ideas. तो ये not a fact को बोलने के लिए उन्होंने इतना सारा बोल दिया कि भाई किसी भी scientific discipline में there is no evidence to refute it. But at the same time, it is not a theory. के बाद immediately बाद ये भी बोला गया है कि एवोल्यूशन हैपन्स, इट्स अ मैकेनिज्म. इससे पहले जहाँ पे ये बोला है ना कि फंक्शन ऑफ एनवायरमेंटल एंड बायोलॉजिकल असॉल्ट्स. बट व्हाई इज इट नॉट अ थ्योरी? व्हाई इज इट अ फैक्ट? बिकॉज थ्योरी का क्या होता है कि थ्योरी हमें सपोर्ट या डिनाई करनी पड़ती है. बट अभी तक इस थ्योरी को डिनाई करने के लिए हमें कोई एविडेंस नहीं मिला है. सो सी बिकम्स द मोर अप्रोप्रिएट ऑप्शन ओवर हियर. देयर इज नो एविडेंस टू रिफ्यूट इट. Coming to the next question, with reference to the passage, the following assumptions have been made. Only species that have the ability to overcome environmental catastrophes will survive and perpetuate. This is correct. More than 90% of the species of the earth are in danger of getting extinct. No, this is not correct.
मोर देन 90% ये हमें कहीं नहीं बोला गया, हमें ये बोला गया है कि अब तक जितनी भी स्पीशीज़ थी उनमें से 90% एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। डार्विन्स थ्योरी एक्सप्लेन्स ऑल नेचुरल फिनोमिना, बिल्कुल ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ एवोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं डार्विन। सो ए बिकम्स द अप्रोप्रिएट ऑप्शन ओवर हियर एंड 33 का आंसर बिकम्स ए। कमिंग टू द नेक्स्ट सेट ऑफ पैसेजेस एंड ये वाले जो क्वेश्चंस थे, दीज वर द क्वेश्चन दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट फॉर सेट थ्योरी, right? So directions for the following 4 items. Okay, for 2 or 3 generations past, ever increasing number of individuals have been living as workers merely, not as human beings. Workers merely, not as human beings. An excessive amount of labor is ruled today in every circle of society, with the result that the man's spiritual element cannot thrive. Excessive amount of labor is rule. He finds it very difficult to spend his little leisure in serious activities. Leisure in serious activities. He does not want to think, or he cannot even if he wants to. He cannot even if he wants to. He seeks not self-improvement but entertainment, which would enable him to be mentally idle and to forget his usual activities. Therefore, the so-called culture of our age is dependent more on cinema than on theatre. Okay, culture of our age. More on newspapers and magazines and crime stories than on serious literature. Okay, the passage is based on the idea that man should not work hard. That is not the case. The passage is based on the idea that man is working probably too hard. The great evil of our age is overstrain, which is what we just talked about. So this seems appropriate. Man cannot think well. This is not the case. Man can think well, does not have the time. Man cannot care for his spiritual welfare. That is again not the case over here. So B is the most appropriate option over here. Man does not seek self-improvement. Does not seek self-improvement. Why? Because he is not intellectually capable. That is not the case. Does not seek self-improvement because he does not have the time. Right? ये क्या था? He does not want to think, or he cannot even if he wants to. So it is not that he does not seek self-improvement, not that everybody seeks self-improvement, but it is not because he is not intellectually capable. He has no time to do so. Seems appropriate. Is distracted by materialism. Is distracted more by overwork, not materialism. So, or you could also argue that materialism is causing the overwork, but for this passage doesn't seem appropriate. Loves amusement and is mentally idle. Again, not appropriate. B is the most appropriate option over here, 42. So let's come to the next passage. The demographic dividend, which has begun in India and is expected to last another few decades, is a great window of opportunity. Okay. The demographic dividend is basically a swelling in the working age population, which conversely means that the relative ratio of every young and very old, which has begun in India, expected to last, is a great window of opportunity. Expected. The demographic dividend, a swelling in the working age population, which conversely means that the relative ratio of very young and very old for a while will be on the decline. From the experience of Ireland and China, we know that this can be a source of energy and an engine can be a source of energy and engine for economic growth. The demographic dividend tends to raise a nation's average savings rate, since in any nation it is the working age population that is the main saver. And since the saving rate is an important driver of growth, this should help elevate our growth rate. Okay, should help elevate. However, the benefits of demographic dividend depend upon the quality of the working age population, and this implies bringing back the importance of education, acquisition of skills, and human capital. Okay. राइट, सो कैसे देखा जाए वैसे? एंड सिंस द सेविंग रेट, ओके, कैसे क्या देखा जाए? क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं एंड उसके हिसाब से करते हैं. विच इज द फॉलोइंग वुड इनवेरिएबली हैपन इन अ कंट्री. तो अब ये बहुत सिंपल सी चीज़ देखो, आपने ऊपर क्या हो रहा है? कैन बी अ सोर्स ऑफ एनर्जी, शुड हेल्प, एक्सपेक्टेड, और यहाँ पे बोला है इनवेरिएबली हैपन इन अ कंट्री व्हेन द डेमोग्राफिक डिविडेंड हैज़ बिगन टू ऑपरेट. The number of illiterate people will decrease. Not the case. Implies bringing back the importance of education. Implies, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि number of illiterate people will definitely decrease.
और ये इनवेरिएबली बोला है, तो मतलब गारंटी क्या होगी? द रेशियो ऑफ वेरी ओल्ड एंड वेरी यंग विल डिक्रीज फॉर वेल, दिस विल हैपन, दैट इज द एंटायर मीनिंग ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड. पॉपुलेशन ग्रोथ रेट विल क्विकली स्टेबिलाइज. ओके, ये इसके बारे में देखा जाए, ये भी कहीं नहीं लिखा है. क्विकली स्टेबिलाइज, वॉट इज़ क्विकली? क्विकली कैन बी लाइक 5 years, 10 years, 2 decades. तो ये वेग स्टेटमेंट है जिसका कोई डेटा में या इस पैसेज में बैकिंग नहीं है. द डेमोग्राफिक डिविडेंड टेंड्स टू रेज सेविंग रेट एनी नेशन, डजंट सीम अप्रोप्रिएट. तो सेलेक्ट द करेक्ट कोड. एंड अगर मैं ऑप्शंस देखूं तो अगर मैं 1 रॉन्ग कर देता हूं तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, तो मुझे थर्ड पे जाने की भी ज़रूरत नहीं है. बी बिकम्स द करेक्ट आंसर इन दिस केस. Let's come to the 44th. With reference to the passage, which of the following inferences can be drawn? Inference क्या होता है? Unspoken चीज़ें जो पैसेज बता रहा है हमें. Assumption क्या होता है कि ये पैसेज ने बोला नहीं है, हम मान रहे हैं कि ऐसा तो होगा. Demographic dividend is an essential condition. Again, strong word. वहाँ पे सारे के may, can, should था. Is an essential condition for a country to rapidly increase its economic growth rate. Not necessarily true. हमें ये बताया गया है कि चाइना और आयरलैंड के एग्जाम्पल से कि भाई ऐसा हो सकता है, बट एसेंशियल कंडीशन है डेमोग्राफिक डिविडेंड तो नहीं कहीं बोला गया. प्रमोशन ऑफ हायर एजुकेशन इज एन एसेंशियल कंडीशन फॉर अ कंट्री फॉर इट्स रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ. प्रमोशन ऑफ हायर एजुकेशन, ओके, तो ये डूबियस स्टेटमेंट है कि मतलब हमें ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल इस मोमेंट पे नहीं लग रही है. सो लेट्स सी कि भाई नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है. प्रमोशन ऑफ हायर एजुकेशन इज़ एन एसेंशियल कंडीशन फॉर अ कंट्री फॉर इट्स रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ. ओके, स्टेटमेंट सीम्स अप्रोप्रिएट, बट लेट्स सी कि भाई क्या इसे पैसेज ने इतना ध्यान दिया है. सो फॉर द एक्सपीरियंस ऑफ आयरलैंड चाइना वी नो दैट कैन बी अ सोर्स एंड engine of economic growth. The demographic dividend income saving rate, saving is an important driver, should help elevate the benefit of, depend on the quality of the working age population, and implies bringing back the importance of education, acquisition of skills and human capital. Right. तो अब क्या है कि promotion of higher education again but is an essential condition. Promotion of higher education is important but मतलब again सो ये 44 वाला जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ी ये स्टेटमेंट्स डूबियस ही लग रही हैं आपने वो. एंड फॉर द डूबियस नेचर ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आई वुड सिंपली से कि डेमोग्राफिक डिविडेंड इज एन एसेंशियल कंडीशन फॉर अ कंट्री. अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी डूबियस स्टेटमेंट, बट इन्फरेंसेस पूछा गया है आपसे, तो इन्फरेंसेस कैन बी ड्रॉन कि क्या पोटेंशली इनसे मैं ये निकाल सकता हूँ. तो पोटेंशली तो हाँ निकाल सकते हो, पोटेंशली तो हाँ निकाल सकते हो, बट अगेन दिस इज़ वन ऑफ दोज कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस कि पता नहीं. बट फर्स्ट स्टेटमेंट डजंट सीम ऑल दैट मच अप्रोप्रिएट, सो आई वुड बी समवेयर बिटवीन दीज टू, बी एंड सी. कि टू इज अ better statement which can be inferred from the passage above, but 1 not so much, so B या C में से कोई इधर सही आंसर होना चाहिए. Right, 34. So coming to the next set of passages, we are almost halfway through. बहुत ही बढ़िया चीज़. ये वीडियो को भी 45 minutes ऑलमोस्ट होने वाले हैं. So if you are with me so far still yet, nice. In an economic organization, allowing mankind to benefit by the productivity of machines should lead to a very good life of leisure. ठीक है, benefit by the productivity of machines should very good life of leisure, and much leisure is apt to be tedious except for those who have intelligent activities and interests. If a leisured population is to be happy, it must be an educated population and must be educated with a view to enjoyment as well as to direct usefulness of technical knowledge. Okay, best reflects the underlying tone of the passage. ठीक है, underlying tone कि भाई क्या कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे. Only an educated person can make the best use of the benefits of economic progress. Only an educated population
can make the best use of the benefits of economic progress. Okay, seems appropriate. All economic development should be aimed at the creation of leisure. Not necessarily. Economic organization allowing mankind to benefit by the should lead to a very good life. Should, again, right? All economic should be aimed at creation of leisure. And much leisure is apt to be tedious, except to those who have intelligent activities and pursuits. So tone is not talking about कि leisure create करना है नहीं कर रहा है. Tone is talking about कि अगर leisure होता तो कौन enjoy कर पाता, right? An increase in the educated population of country leads to an increase in the happiness of its people. Not the case. Use of machines should be encouraged in order to create large leisured population. Not so much appropriate again. So A becomes the most correct answer over here. If presents bring less thrill now, then now that we are grown up, perhaps it is because we have too much already, or perhaps it is because we have lost the fullness of the joy of giving. Perhaps too much already, or perhaps it is because we have lost the fullness of the joy of giving, and with it the fullness of the joy of receiving. Children's fears are poignant, their miseries are acute, but they do not look too forward nor too far backward. Their joys are clear and complete because they have not yet learnt always to add but to every proposition. Just like यहाँ पे but डाला था इन्होंने. Perhaps we are too cautious, anxious, too skeptical. Perhaps some of our cares would shrink if we thought less about them and entered with a more single-minded enjoyment into the happiness that comes our way. Happiness that come our way. So, with reference to the passage, which of the following statements is correct? Okay. It is not possible for adults to feel thrilled by presents. Not possible. It is a very strong statement. बिल्कुल ही गलत है. There can be more than one reason why adults feel less thrilled by presents. Seems appropriate. There can be more than one reasons कि भाई यहाँ पे हमें कई चीज़ें बताई गई हैं कि either it could be कि we have too much already, or it could be that we have lost the fullness of joy, or it could be because we are too cautious, anxious, skeptical. So ये तो definitely मतलब it seems appropriate. The author does not know why adults feel less thrilled by presents. ऑथर ने कई सारे कारण हमें दिए हैं, बट अगर डेफिनेट बात करी जाए तो शायद नहीं, बट स्टिल डोंट सीम अप्रोप्रिएट. Adults have less capacity to feel the joy of loving or being loved. ये भी कहीं पे नहीं बोला गया है. So B seems the most appropriate option over here. 53 के बात करें तो author of the passage is against worrying too much about the past and the future. Okay, seems appropriate. क्योंकि यहाँ पे कुछ बोला गया था इस तरीके से कि भाई children do not look too forward or too forward or too far behind. The joys are in the present by receiving presents. Being in the habit of thinking about presents, तो ये तो नहीं है. Not being thrilled by new things. Not really. इसका कारण ये है कि not being thrilled by new things is one of the क्या बोलते हैं symptoms of a much bigger problem that the author feels that we have. Giving and receiving joy only partially is against giving and receiving joy only partially. But giving and receiving joy only partially is also again one of the symptoms of a larger problem, which is कि we have too much, we have lost the fullness of joy because we're looking too far back or too far behind forward. कि भाई हम आइदर फ्यूचर में अटके हुए हैं या पास्ट में अटके हुए हैं, जिस कारण से हम पर बेटर एंजॉय नहीं कर सकते. डी भी हो सकता था पॉसिबली पोटेंशियली, बट बिटवीन ए एंड डी ए सीम्स मोर अप्रोप्रिएट, राइट. कमिंग टू द नेक्स्ट सेट ऑफ पैसेजेस. ओह लवली, दिस इज द बेस्ट पैसेज एवर. तो हम पहले बेस्ट पैसेज एवर को करेंगे. The social order is a sacred right which is the basis of all other rights. Great. Social order, sacred right, basis of all other rights. Nevertheless, this right does not come from nature. Does not come from nature and must therefore be founded on conventions. Okay. With reference to the above passage, which the following statements are correct. Conventions are the source of rights of man. Not really. Conventions enable the rights of man. क्यों? क्योंकि social order is what is the source of rights of man.
राइट, क्योंकि फर्स्ट लाइन यही बोली गई है, सोशल ऑर्डर इज द बेसिस ऑफ ऑल अदर राइट्स, बट in order to enable those rights we need conventions. So conventions are not the source of rights of man, conventions enable the rights of man. Rights of man can be exercised only when there is social order, which is correct, which is exactly what is being said in the second statement, which is that nevertheless this right does not come from nature and must be founded on conventions. So rights can be exercised only when there is social order which is enabled through conventions. First line and second line ये है, तो इसका B seems the most appropriate option. Right. 63. Right, and CA, the majority of people who fail to accumulate money sufficient for their needs are generally easily influenced by the opinions of others. They permit the newspaper and the gossiping neighbors to do their thinking for them. Okay, opinions are the cheapest commodities on earth. Everyone has a flock of opinions ready to be wished upon by anyone who will accept them. If you are influenced by the opinions of others when you reach decisions, you will not succeed in any undertaking. Which of the following is implied by the passage? Most of the people do not accumulate money for their needs. Not really. ऐसा हमें कहीं नहीं बोला गया है, हमें बस ये बोला गया है कि जैसे कुछ लोग हैं जो पैसा इकट्ठा कर लेते हैं और कुछ लोग हैं जो नहीं कर लेते, जो नहीं करते उनमें से जो ज़्यादातर लोग हैं उसके बारे में बोला गया है, हमें ये नहीं बोला गया है कि ये ज़्यादा बड़ा ग्रुप है. मोस्ट ऑफ द पीपल नेवर फेल टू अक्यूमुलेट मनी फॉर देयर नीड्स. अगेन मोस्ट ऑफ द पीपल के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमें इन्फॉर्मेशन है कि जो लोग नहीं कर पाते उनमें से ज़्यादातर ऐसे होते हैं जो ईजिली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. We do not know anything about this group of people, which is who accumulate sufficient money for their needs. There are people who fail to accumulate money for their needs. Yes, definitely. There is no need to accumulate money is again absurd. कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का. So C becomes the most appropriate option here. What is the main idea of the passage? The main idea of the passage is people should not be influenced by the opinions of others. So very appropriate. This is what has been talked about. People should accumulate as much money as they can. कहीं ये बात नहीं करी गई है. People should neither give nor accept opinions. कहीं बात नहीं करी है. People will succeed in any undertaking if they do not accept any opinion at all. So this was what they tried to negate the last statement, but that is also not appropriate here. So 62 का आंसर आपका हो जाएगा A. So this is again one of the very easier passages. क्यों? क्योंकि सीधा सीधा हमें दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन ऊपर से निकल के आ रहे हैं. राइट, कमिंग टू द नेक्स्ट सेट ऑफ पैसेजेस, एंड these 3 passages will bring us to the end of the video. एंड ये घंटे भर की वीडियो हो जाने वाली मुझे लग रहा है, बट लेट्स सी. राइट, तो लेट्स गो अबाउट दिस. टू एनकरेज रिसर्च इज़ वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ अ यूनिवर्सिटी. कंटेम्प्रेरी यूनिवर्सिटीज़ हैव एनकरेज्ड रिसर्च. ठीक है, encourage research is one of the functions of a university. Contemporary universities have encouraged research not only in those cases where research is necessary, ठीक है, but in all sorts of entirely unprofitable subjects as well. Scientific research is probably never completely valueless. तो it's a double negative, meaning कुछ value होती है. Double negative in English means it's a positive. Mathematics maybe, but not in all languages. However silly and insignificant it may seem, however mechanical and unintelligent the labors of researchers, there is always a chance that the results may be of value to the investigator of talent, who can use the facts collected for him by uninspired but industrious researchers as the basis of fruitful generalization. ठीक है, but where research is not original but consists in the mere rearrangement of existing materials, where its object is not scientific but literary or historical, then there is a risk of the whole business becoming merely futile. Okay, let's look at the questions. The author's assumption about scientific research is that it is never very valuable. No, he says it is always slightly valuable at least. It is sometimes very valuable. Okay, but not the core assumption here, but this is also one of the assumptions. But then again, it's also talking about in such cases it will become completely futile. So
It is never without some value, which is what we talked about when we said never completely valueless. That means always never without some value, right? Never without, again double negative हो गया, which means कि there is always some value. It is always very valuable, not really. So C becomes the most appropriate option over here. Now let's come to 72. According to the author, not many research results can be of value to an intelligent investigator. Not many research results के बारे में नहीं बोला, उन्होंने बोला है कि कोई भी research result valuable हो सकता है. क्यों? That is the statement, right? कि there is, however silly and insignificant, however mechanical and unintelligent the labors of the researchers, there is always a chance that the results may be of value to the intelligent investigator, right? Always a chance. So not many research results can be of value to an intelligent investigator. Not really. A research result is always valuable. Not really. Any research result can be of value to an intelligent investigator. So this seems appropriate. A research result may always be of some value to an intelligent. Must always. Not really. So C becomes the most appropriate option over here. Coming to the last passage. And we'll end the video with that, because math वाला जो part है we'll cover in another video. And any which way, अगर आपने math का passages आपने कहीं और से check किए हैं, so that part is also appropriate and should be fine. How best can the problems of floods and droughts be addressed so that the losses are minimal and system becomes resilient? Flood and droughts be addressed so that losses are minimal and the system becomes resilient. Losses are minimal. In this context, one important point that needs to be noted is that India gets too much water during 120 days and too little for the remaining 245 days. This skewed water availability has to be managed and regulated for its consumption throughout the year. ठीक है. Which one of the following best reflects the practical, rational and lasting solution? Okay, तो हमें एक प्रॉब्लम दी गई है कि इंडिया में वाटर इज टेम्पोरली टेम्पोरली अवेलेबल है, कि कुछ महीने होते हैं जहाँ नहीं होता है, कुछ महीने होते हैं जहाँ बहुत सारा होता है और बाकी फिर नहीं होता है, राइट? सो what is the practical, rational and lasting solution to this? Construction of huge concrete storage tanks and canals across the country. Okay, can be done. Changing the cropping patterns and farming practices. Again, ये थोड़ा unrelated लग रहा है. करने को तो हाँ ठीक है, it can be one of the solutions, but this is unrelated to what is being talked about. So interlinking of rivers across the country. Again, practical, but let's see the last statement. Buffer stocking of water through dams and recharging aquifers. Okay, तो B तो मतलब doesn't seem likely at all, but A, C and D में हमें choose करना है. तो construction of huge concrete storage tanks and canals across the country, whereas interlinking of rivers across the country and buffer stocking of water through dams and recharging aquifers. So most appropriate, best practical, rational and lasting solution. Lasting solution is one of the keywords over here. कि lasting solution अपना artificial नहीं होगा. Lasting solution will be based on natural जो हम चीज़ें कर सकते हैं. तो interlinking of rivers ठीक है, can be appropriate, but recharging of aquifers becomes the most important thing because it is asking for a lasting solution, right? So that brings us to the end of today's video. I hope कि भाई मतलब अगर कोई कहीं अटक रहा था लटक रहा था तो उसको इस चीज़ से फ़ायदा हुआ, क्योंकि इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के आंसर कीज़ में देर आर सम और दी अदर प्रॉब्लम्स, राइट? एंड ब्रिंगिंग बैक टू द प्रिंसिपल्स कि अगर आप UPSC प्रेप के कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हो, सो ऑल आर कोर्सेज विल बी मेंटरशिप बेस्ड. वाई? बिकॉज वी वांट टू गाइड यू. सिर्फ एक कोर्स बेच के अपन भाग के जाने का कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं. दूसरी चीज़, अगर आप कोई भी कोर्स लाइव रिकॉर्डिंग के साथ एक्सेस करते हो या खरीदते हो, you will have lifetime access to those recordings. You can do whatever you want, you can share them around, which we would not want, but अगर करते हो तो मतलब ठीक है. And doubts day, obviously कि join any course and get access to all doubt sessions. कि every Saturday we'll have 4 doubt sessions. One will be for GS basics, one will be for mains answer writing, one will be for sociology, one will be for CSAT. तो अगर आपने कोई भी हमारा कोर्स ज्वाइन किया है तो यू गेट एक्सेस टू ऑल 4 डाउट सेशंस ऑन एवरी सैटरडे फॉर 1 year, दैट इज टिल प्रीलिम्स 2023. तो मेंटरशिप वाली जो चीज़ है, वी विल बी देयर फॉर यू थ्रू एंड थ्रू बिकॉज वी वांट यू टू सक्सीड, राइट? एंड बेस्ट ऑफ लक. ये CSAT का जो सोल्यूशन है, इसका आंसर की विल ऑल्सो बी अवेलेबल इन द लिंक टू द वीडियो
वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक में, राइट। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।